हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं एच के शर्मा। और आज हम लोग MCO 01 को ही कंप्लीट करते हुए यूनिट 16 स्टार्ट करें। एंड यूनिट 16 इज ऑन पावर एंड पॉलिटिक्स। बोथ द वर्ड्स आर वेरी वेरी डेंजरस। Am I right or not? So, but you will get one sure short question from this chapter. That is sure. हमेशा आता है, एवरी ईयर आता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से, एंड वट एवर द नोट्स दैट आई विल राइट ऑन द बोर्ड, ट्राई टू नोट इट डाउन एंड एक्सपैंड. ओके, ऑन अ डेली बेसिस यू मस्ट एक्सपैंड, बिकॉज आप जितना एक्सपैंड करेंगे आंसर्स पॉइंट्स को, उतनी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सबसे पहले पावर क्या है, राइट. एंड पावर, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में दो हेड्स हैं. वन इज द प्राइम मिनिस्टर, द अदर इज द प्रेसिडेंट. बट पावर कहाँ पे? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज मोर पावर देन द प्रेसिडेंट, बिकॉज whatever the important decisions that India takes, it all depends on the prime minister. President is just a nominal head of a country in case of India. But it is not the same in case of an organization. यहाँ पे कहानी एकदम डिफरेंट है. Because without power, you cannot do anything. An organization cannot function without power. If an organization doesn't give power to its managers, he cannot control the activities, he cannot manage his staffs. So power, what is power? Power is the ability to influence the others in a desired fashion or desired manner. There is not much difference between power and the last chapter that we did was leadership. दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है. There is very little difference. Both the acts are influencing act. यहाँ पे influence करना है आपको, सामने वाले को, your subordinates. So you must have that power to influence others. So that is what I have written here in the key points, जो आपको define करेंगे कि power क्या है. It is the power which controls the activities of an organization. Positions gives power. Like for example, manager, officers, supervisors, they are positions. Powers are attached to positions. Chair, in simple words. Okay, it is the ability to influence others. Just now I told you about that. Manager's ability depends on power. The more power a manager enjoys, the more ability he will be having. जितनी ज़्यादा power, उतनी ज़्यादा ability, उतनी ज़्यादा capabilities. Okay, and power helps to control the individuals. Without power, you cannot control the subordinates. और अगर सबॉर्डिनेट्स को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो दे विल नॉट परफॉर्म इन अ डिजायर्ड मैनर. अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे. सो दिस पावर इज सो इम्पॉर्टेंट एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स. अगर पावर है, मैनेजर्स को अगर सफिशिएंट पावर दे रहा है, सो ऑब्वियसली वर्कर्स अच्छा काम करेंगे एंड दैट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ द. एंड देखते हैं डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर, कि एक मैनेजर को, एक इंडिविजुअल को पावर मिलता कहाँ से, और इन सिंपल वर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर. अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो दोनों का मतलब एक ही है एंड आपको इस तरीके से आंसर कंपोज करना है. मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है. टाइप्स ऑफ पावर्स, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पावर्स, फॉर्मल पावर एंड इनफॉर्मल पावर. एज द नेम इंप्लाइज, फॉर्मल पावर, नाउ दिस पावर is attached or given due to the position, due to the structure of the organization. Like for example, manager के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव. सो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ऐसी है कि उसके पास में पावर ज्यादा है, मैनेजर के पास में कम है. Again, supervisor has less power than a manager. So like that. So these are formal powers. These are already designed in the organization structure. And again, this formal power is divided into four parts. क्या क्या parts हैं? Legitimate power, reward power, coercive power, and information power. Now let's see one by one what are these different types of formal powers. Legitimate, as I have just written one key word for this, that is legal. लीगली जो आपको अथॉरिटी मिलती है,
As a manager, legally there are, according to the Companies Act or according to the Constitution of India, whatever the powers that have been given for that position, that is called legitimate power, normal power. And 90% of the managers, they get only legitimate powers. So this is one of the most important source of power in an organization. The second one is reward power. As the name implies, reward. If someone is rewarded with promotion or praise or recognition, so he acquires a type of power to influence others. So that is called reward power, and this is generally it is found very rare. Then coercive, as the name implies, coercive, that means to punish, power to punish others. Generally, the police, they have the coercive power, they can punish the criminals, right? In the same way, there are some powers attached to the position which are coercive in nature. They can punish the employees if they perform any such, anti-dump activities in the organization. Then comes information power. Generally, information here, if the manager or a person, if he receives some information, जो इंफॉर्मेशन उसने रिसीव की है वो अगर उसके दूसरे इंडिविजुअल्स से ज़्यादा है उसके पास में इंफॉर्मेशन कि कोई एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ से के बारे में उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ से उसको पावर मिल जाती है कि यस आई नो आई हैव मोर नॉलेज देन यू, तो यू कैन डोमिनेट, यू गॉट द पावर. So like this. So there are 4 types of formal power. Let's discuss about informal power. Informal power is not designed in the organization structure. Rather, informal power is acquired due to one's own skill, knowledge, experience, expertise. जिसके पास में जितनी स्किल है वो उतनी ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है, उतना ज़्यादा पावर गेन कर सकता है. And again, this can be divided into 3 types: expert power, reference power, and charismatic power. Now, expert power. If someone is a very expert, it is very hard to replace him. जैसे कोई ऐसे engineers होते हैं जो बहुत ही talented होते हैं, and these talented people are hard to get. तो वहाँ पे he enjoys expert power. उसके पास में expert power आ गई, बहुत expertise. Like that, reference. अगर if an individual has some reference with the ministers or such influential people, so he might get power. दूसरे लोग उसे डरने लगेंगे क्योंकि भाई he has friendship with the minister, he has reference of the top management of the company. So like that he gets reference power. And the last one is charismatic. Basically this type of power is not found in the organization. ये होता है जो monks, saints, आपने देखा होगा जो प्रवचन देते हैं उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो इट इज ड्यू टू देयर देयर फीलिंग, देयर इमोशंस, देयर अटैचमेंट टू ए पर्टिकुलर रिलीजन, जिसकी वजह से चैरिस्मेटिक पावर डेवलप होता है उनके पास. एंड पीपल दे ब्लाइंडली फॉलो दिस टाइप ऑफ पीपल. Okay guys, let's move on to the next concept of this chapter, and this is the sources or process of obtaining power. How individuals in the organization obtain power, from what are the different sources from where they get power, right? So this is also a very, very important question, and you see I have written here with the help of a flow chart. There are basically 6 processes, the 6 sources from where individuals get power. The first one is friendliness, second expert skill, third one networking with powerful people, fourth coalition, credibility, and building pressure. Now let's see one by one. We will discuss all these 6 points. Right. First one is friendliness. Some people are quite friendly. They make, here and there, they make friends. And they make friendship with, powerful people.
कभी कभी देखा होगा कोई सबॉर्डिनेट्स चमचागिरी करते हैं मैनेजर की. वाई? बिकॉज पावर. बिकॉज दूसरों की नजरों में उसको लगेगा कि ओके फाइन, इसके रिलेशन बहुत टॉप लेवल तक है, मैनेजर्स के साथ में है, तो ही गेट्स पावर. तो ड्यू टू फ्रेंडलीनेस with powerful people we can obtain power. The second one, expert skill. Now there are some people, they get power due to their skills, their experience, their expertise. They are so experts in their skills, or they have so much of knowledge about a particular thing that they, it is very hard to find a substitute for this type of people. They are exceptional. You cannot replace them. They are indispensable for the organization. उनका कोई सानी नहीं मिल सकता. वो काफी उनके अंदर टैलेंट होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उनको रिप्लेस करना. थर्ड, नेटवर्किंग विद पावरफुल पीपल. कभी कभी ऐसा होता है ना कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी होती है, दे बिल्ड ए नेटवर्क. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, उसके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, सोसाइटी है, वो जितने भी लोगों को जानता है, तो मैक्सिमम वो ट्राई करता है कि जो अच्छे लोग हैं, पावरफुल पीपल हैं, उनके साथ में वो फ्रेंडशिप करता है, उनके साथ में नेटवर्किंग करता है, उनको हेलो हाई करता है. सो इन दैट वे, ड्यू टू दैट नेटवर्किंग विद पावरफुल पीपल, सम पीपल गेट पावर. द नेक्स्ट वन इज coalition. Coalition means alliances. Sometimes some people who are more skilled than others, they may form an alliance with the other people, and वहाँ पे वो लोग dominate करते हैं सामने वाले को, because उनके पास में स्किल है, एक्सपर्टाइज है, एंड वो जानते हैं किस तरीके से काम करना है. फाइन. नेक्स्ट वन इज credibility. Now here credibility means some individuals or employees, उनका नेचर, उनकी कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज होती है, either physical, mental qualities like personality, honesty, truthfulness, the way they do the work. So that's very fantastic, that's very impressive, and no organization will ever try to remove this type of employees from them. So it is their credibility, or it is their that special quality that makes makes them they stand out from other people. They are different, right? So that is credibility. And then building pressure. Now this is completely a different type. Here we use force to obtain power, like trade unions. In most of the big companies, you will find that there are trade unions, and they always, stand for, or they always keep on demanding for the employees' welfare. And whenever they find the employees are exploited, they raise their voices through strikes, lockouts, like that. Fine. So always, the management of a company is always scared of these trade unions. Fine. So when an employee is attached to the trade unions, they obtain some sort of power, and that is called building pressure. So these are the major processes by which an individual in the organization obtain power. Let's move on to the next part of the same chapter, and this is organizational politics. Again, as far as India is concerned, politics plays a very important role. Where there is power, there is politics. Both are very good friends. Without power, you cannot play politics. And those who are in politics, they have power. And as far as a company, an organization is concerned, there also you will find politics. So let's try to understand this important concept, because as far as a normal citizen, they believe that politics means elections, ministers, all that. But politics is also there in the organizations and in the companies. Now let's try to find out the exact meaning
of politics. I have written few key sentences on politics. The first one is, it is the unauthorized use of power. If someone has power and he misused that power, it becomes unauthorized. Okay, so this politics is like, the power is the main source of politics. Individuals play politics to gain more power and fulfill their own interest. Now, this is the most important sentence which defines the politics. That generally the managers, those who have power, like subordinates, employees, normal employees, उनके पास में इतना पावर नहीं होता, तो वो ज़्यादा पॉलिटिक्स करेंगे भी नहीं, उनको सैलरी से मतलब है. लेकिन जो पावर है, जिनके पास में पावर है, लाइक सुपरवाइजर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिसर्स, ये पॉलिटिक्स प्ले करते हैं. दे प्ले पॉलिटिक्स, फाइन. एंड दो ऑब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. मेन दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग पॉलिटिक्स करते हैं. फर्स्ट, individual interest. They want to fulfill their individual, their personal interest. And second, to gain more power. So it's very simple. So all those activities of the managers or those who have power, so they play this politics in organizations. Okay, fine. Now, basically, when we talk about politics, let's take few examples. कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स किस तरीके से लोग प्ले करते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स. वन इज लेजिटिमेट, द अदर इज इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर और पॉलिटिक्स. इन लेजिटिमेट आई हैव रिटन, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, लाइक ब्लेमिंग अदर्स, डिसोबेइंग ऑर्डर्स, फॉर्मिंग कोएलिशंस एंड शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस. हमारी आदत होती है टू ब्लेम अदर्स, to make complaint of others. Very bad practice. We never look in our own mistakes. We always want to complain of our friends, our colleagues. So that is a part of politics. And then disobeying orders. आपको काम दिया गया है and आप काम करते नहीं है ठीक से, टाइम से उसको नहीं करते हैं, so that is disobeying of orders. Forming coalitions, दूसरे इंडिविजुअल्स या दूसरे एम्प्लॉइज के साथ में मिलकर ग्रुप बाजी करते हैं. यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सो दैट इज ऑल्सो लेजिटिमेट पॉलिटिक्स. एंड शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज वन ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम, जहां पे एवरी बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सीक्रेट्स होते हैं एंड उसको वो मेंटेन करती है. दैट शुड नॉट बी शेयर्ड टू द अदर कॉम्पिटिटर्स. एंड अगर इफ a manager share those confidential or secret information to other companies, so that can hamper the working of the organization. So that's a big mistake. Now let's see the illegitimate political behavior. Group protest. बहुत सारे employees मिलके कोई चीज का protest कर रहे हैं. Wearing unorthodox dresses. As we know, when we go to an office or organization, we have to wear or we should wear formal dresses. लेकिन अगर आप informal dresses पहन के जाते हो, it looks bad. It creates a wrong impression in the minds of others, right? तो वहाँ पे वो uniformity आपको maintain करनी चाहिए. Then whistling. When you are working, if you are whistling, काम कर रहे हैं, अगर साइड से कोई चला गया आपसे, तो आप whistling कर रहे हो, so that's a bad. Okay guys, ये इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है एंड देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स का जन्म कैसे होता है? बेसिकली इसके दो कारण हैं. देयर आर टू फैक्टर्स, वन इंडिविजुअल, द अदर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. इंडिविजुअल फैक्टर सिंपल है बिकॉज जनरली दिस इज यूज्ड बाय मैनेजर्स एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि जनरली organizational politics is played for more power and to fulfill interest, own interest, personal interest. And organizational factors. Now, what are those factors? I have written few important reasons or factors that affect the politics. First,
to control over the resources of the organization. Sometimes ये एक्चुअली होता है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर कंपटीशन है. तो जो रिसोर्सेस हैं लाइक मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए डिपार्टमेंट ऑलवेज compete with other departments. So basically they play politics so that they control more and more of the resources. And even like बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं जो अननेसेसरी बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं उनको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फॉर पर्सनल गेन. देन अनक्लियर पॉलिसीज. इफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन द रूल्स पॉलिसीज अगर ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर कट वेल डिफाइंड रूल्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इट गिव्स राइज टू पॉलिटिक्स. उसका फायदा उठा लेंगे. द पीपल, द एम्प्लॉइज विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स डेमोक्रेटिक कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. डेमोक्रेटिक कल्चर मीन्स ओपन कल्चर. कोई डिसिप्लिन नहीं है, एम्प्लॉइज को कोई तरीके का हम लोग उनको थ्रेट नहीं करते, उनको प्रेशर नहीं करते, उनको वर्कलोड नहीं देते हैं. तो वहां पे वो खुले हो जाते हैं, आजाद. तो वो काम जो है वो अपने हिसाब से करते हैं. फाइन. दे ऑलवेज ट्राई टू स्किप द वर्क. तो दैट क्रिएट्स दिस डेमोक्रेटिक कल्चर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ए कंपनी. देयर शुड बी मिक्स कल्चर जहाँ पे डेमोक्रेसी भी हो एंड सम ऑथोरेटिव सिस्टम भी होना चाहिए सो दैट उनके मन में डर रहे. एंड द लास्ट वन इज टू रिड्यूस वर्कलोड. समटाइम्स कुछ एक कंपनीज में ऐसा भी देखा गया है कि एम्प्लॉइज बहुत सारा अगर वर्कलोड उनको मिलता है, बहुत सारा काम मिलता है, एंड टू स्किप द वर्कलोड, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए दे प्ले पॉलिटिक्स. कोई भी बहाना बना सकते हैं कि भाई बीमार हो गया, तबीयत खराब था, आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस. वेरी गुड एग्जाम्पल. तो लाइक दैट ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जो एम्प्लॉइज दे सकते हैं टू स्किप देयर वर्क. तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड आई थिंक जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं ये टू द पॉइंट नोट्स हैं. आपको इनको एक्सप्लेन करना चाहिए. फाइन. एंड हो सकता है आपको एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस मिले. एंड मेरे पास में इनके पीडीएफ भी हैं जहाँ पे मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे पॉइंट्स, सारे नोट्स. एंड जिन बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. तो वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टू गेट द पीडीएफ ऑफ द इम्पॉर्टेंट study materials of MCOM. So thank you for watching friends. See you in the next video with a new topic.